maths class and today we'll do measurement. Start with the introduction. In the previous class we have learned about the standard unit of length, mass and capacity. ये हमने previous class में पढ़ा है कि क्या क्या standard unit होती है length, mass और capacity की. In this class we will read some more unit to measure their operation. Everywhere we need to measure the things such as the length of the room, length of the park, length of the cloth, distance between two places, etc. When we go to market or purchase anything to shopkeeper, we ask us, how much do you need? आपको कितना चाहिए? अगर कोई भी चीज़ हम खरीदने चाहते हैं, suppose we are going to buy vegetable or fruits, so the vegetable vendor will ask us कि कितना आपको चाहिए. So he'll say 2 kg of sugar or etc. और अगर आप grocery खरीद रहे हैं तो पूछेगा कितनी sugar चाहिए. When we go to take milk, the milkman asks how many liter of milk you need, and so on. Here you can see, circle the correct unit of the measure. So suppose अगर फ्रूट्स वगैरह हैं तो हम उसको किस में मेजर करेंगे? केजी में. Clear? Next is, there are 3 types of measurement. Measurement of length, mass and capacity. First we'll take measurement of length. The standard unit for length is meter. हम m से represent करते हैं. Kilometer is the bigger unit of length. It is used to measure the distance between 2 places. अगर हमें 2 places के बीच में, 2 cities के बीच की distance measure करनी है, we'll measure in kilometer. Centimeter or millimeter are the smaller unit of the length. They are used for measuring diameter of pipe, length of book, etc. All these units are interrelated. Means हम एक unit से दूसरे में convert कर सकते हैं. Next is the relationship among the unit of length. So here you can see different unit. The standard unit is meter. As we move to the left, we will find decameter, hectometer and kilometer. So every time unit is increasing by 10. As we move to the right, it is decreasing. Decimeter, centimeter and millimeter. Clear? So when we move toward the right side, the unit decrease by 10. So 1 hectometer, here this is hectometer. That is equals to 1 by 10 kilometer. Because hectometer को मैं kilometer में करना है. Clear? 1 decameter, that is equals to 1 by 10 hectometer. Next is conversion of unit. Suppose we want to convert 1 kilometer to meter. Kilometer को हमें meter में convert करना है. So we'll write 1 below the kilometer. Clear? यहाँ पे हमने किलोमीटर के नीचे 1 लिख दिया and write 0 below every unit till meter. मीटर तक जितने भी यूनिट हैं उसके नीचे हम 0 लिख देंगे. So 1 kilometer equals to 1000 meters. Similarly, if we want to convert 1 deca to millimeter, so deca के नीचे हम 1 लिखेंगे and till millimeter we write 0. So 1 decameter, that is equal to 10,000 millimeter. Next is conversion of some standard unit. 1 kilometer, that is equals to 1000 meter. 1 meter, 100 centimeter. 1 meter equals to 1000 millimeter and 1 centimeter equals to 10 millimeter. Now we'll take an example here. Convert the following. 3 kilometer into meter. 1 kilometer equals to 1000 meters. So 3 kilometer equals to 3 into 1000, 3000 meter. Next is evolution time 11.1. Fill in the blanks. The larger unit of length is kilometer. Next, convert the following. 12 kilometer, 37 meter into meter. So 37 is already meter. 12 kilometer equals to 12,000 meter. To 12,000 plus 37, 12,037 meter. Clear? Next, convert the following. 8 meter, 37 centimeter into centimeter. So 8 meter equals to 8 into 100, 800 centimeter plus 37, 837 centimeter. Next, convert the following. 81,634 meter into kilometer and meter. So for that, we'll divide by 1000. Start from the right hand side. First 3 digit, ones, tens and 100. That will be of meter and rest of the digit will be kilometer. So 81 kilometer and 634 meter. Next, using decimal, convert the following. So we have to convert 18,396 meter into kilometers. So we'll divide by 1000. That means 18.396 kilometer. Clear? Next, addition subtraction of the measure of length. So it is same as जैसे हम numbers का करते हैं. Addition subtraction उसी तरीके से होगा. Add 78 kilometer, 360 meter, 37 kilometer, 423 meter. अब हमें क्या चीज़ ध्यान रखनी है? Always
जो सेम यूनिट है उनको हमें ऐड करना है, लाइक किलोमीटर में किलोमीटर और मीटर में मीटर. ऑलवेज राइट किलोमीटर अंडर किलोमीटर कॉलम एंड मीटर के नीचे मीटर को लिखेंगे. सो मेक टू सेपरेट कॉलम, वन इज फॉर किलोमीटर, वन इज फॉर मीटर. किलोमीटर के नीचे किलोमीटर, मीटर के नीचे मीटर. स्टार्ट एडिंग फ्रॉम द राइट हैंड साइड. उसी तरीके से रहेगा 6 + 3 9, 2 + 1 3, 4 + 3 7, 8 + 7 15, 1 carry over, 7 + 3 10 and 1 11. So 115 kilometers, 739 meter. That is our answer. Next is evolution time 11.2. Add the following: 38 kilometer, 54 meter, 96 kilometer, 169 meters. So we'll make two separate column, kilometer and meter. 38 kilometer, 54 meter, 96 kilometer and 169. So put 10 here. Now add them together. 9 0 1 5 plus 1 6 and 1 7, 14 1, 134 kilometers, 709 meter. Clear? Next, subtract the following. Make two separate column, kilometer and meter. 43 kilometer, 681 meter from 86 kilometer, 314. So bigger unit को हम ऊपर लिखेंगे 43, 4 minus 1 3, 3, 6, 2 4, 42 kilometers, 633 meter. Clear? Next is multiplication division of measurement of length. Multiply 84 kilometer 632 meter by 8. So उसी तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे. हमने टू कॉलम बना लिए किलोमीटर और मीटर के. किलोमीटर के नीचे किलोमीटर एंड मीटर के नीचे मीटर. हमें 8 से मल्टीप्लाई करना है. 8 2 16, 1 कैरी ओवर, 8 3 24 एंड 125, 2 कैरी ओवर हो जाएगा. 8 6 40, 8 and 2 50, 0 5 कैरी ओवर, 8 4 32 एंड 5 कैरी ओवर का ऐड कर देंगे 37, 3 कैरी ओवर, 8 8 64 and 3 67, 677 kilometer and 56 meter. Clear? Next is evolution time 11.3. Multiply the following: 102 kilometer, 628 meter by 5. So 2 column, kilometer and meter, 102 and 628 multiply by 5. 5 8 40, 0 4 carry over, 5 2 10 and 4 14, 1 carry over, 30 and 1 31, 3 carry over, 5 2 10 and 3 13, 1 carry over, 1 5 is 5, 530 kilometer and 140 meter. Clear? Next, divide the following: 638 kilometer, 248 meter by 8. So 638.248. हम डेसिमल का यूज़ कर सकते हैं. करेंगे 8 7 56, 7. नेक्स्ट नंबर नोट डाउन करेंगे 8 72 6. नाउ विल पुट डेसिमल 56 6, 8 8 64, 0 and 8, 8 1 8. 79.781 kilometer. Next is measurement of mass. Mass is the quantity of matter that present in the body. Means किसी चीज़ का कितना weight है. The standard unit of mass is gram. The lighter objects are measured in gram, such as the mass of empty bottle, mass of the mobile phone, that is measured in gram. Kilogram is the bigger unit of mass. It is used for heavy objects like mass of iron sheet, mass of motorcycle. उसको हम किलोग्राम में measure करेंगे. Milligram is the smaller unit of mass. It is used to measure lighter object like mass of paper, mass of gold, etc. are measured in milligram. All these units are interrelated. Like this is the decreasing order of unit. As we move to the right, the unit will decrease 10 times. Clear? So the process of converting one unit to another unit will be same as the conversion of unit of length. Some important conversion: 1 kilogram equals to 1000 gram, 1 gram equals to 10 centigram, 1 gram equals to 1000 milligram, 1
ग्राम इक्वल्स टू 1/1000 किलोग्राम, 1 मिलीग्राम इक्वल्स टू 1/1000 ग्राम. एग्जाम्पल लेते हैं, कन्वर्ट द फॉलोइंग 8 किलोग्राम इंटू ग्राम. सो 1 किलोग्राम इक्वल्स टू 1000 ग्राम, सो 8 इंटू 1000 8000 ग्राम. You have to practice all the example. Next is evolution type 11.4. Fill in the blanks. The standard unit of mass is gram. Next, convert the following. 34 kg 613 gram into gram. So 34 into 1000, 34,000 plus 603. So 34,613 gram. Clear? Next is convert the following. 43 gram 43 milligram into milligram. So 1 gram equals to 1000 milligram. So 43 into 1000, 43,000 milligram plus 43. So total is this. Next, convert the following. 42,869 gram into kilogram and gram. So again 1000 से divide करेंगे. So 42 हमारा हो जाएगा किलोग्राम and 869 gram. नेक्स्ट, यूजिंग डेसिमल कन्वर्ट द फॉलोइंग. सो 1000 से डिवाइड करेंगे. यहाँ पे भी हम 81,632 ग्राम को किलोग्राम में करना है. सो दैट इज इक्वल्स टू 81.632 ग्राम. क्लियर? नेक्स्ट, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मेजर ऑफ मास. इट इज सेम एज वी हैव डन इन द लेंथ. उसी तरीके से हमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन, डिविजन प्रोसेस वही रहेगा, ओनली यूनिट चेंज हो रही है. वी हैव टू ऐड 78 kg 379 ग्राम, 51 kg 629. 2 कॉलम बना लेंगे, किलोग्राम एंड ग्राम का. किलोग्राम को किलोग्राम के नीचे, ग्राम को ग्राम के नीचे ऐड करेंगे तो आ जाएगा 130 किलोग्राम एंड 8 ग्राम. क्लियर? नेक्स्ट इज इवोल्यूशन टाइप 11.5. ऐड द फॉलोइंग. 83 किलोग्राम 782 ग्राम, 74 किलोग्राम 916 ग्राम. सो 2 कॉलम किलोग्राम एंड ग्राम. 83 किलोग्राम 782 ग्राम, 74 किलोग्राम 916 ग्राम. ऐड कर देंगे. 6 + 2 8, 8 + 1 9, 16, 1 कैरी ओवर 8, 158 किलोग्राम 698 ग्राम. नेक्स्ट, सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग. उसी तरीके से होगा. हम 128 किलोग्राम 629 ग्राम में से सब्ट्रैक्ट करेंगे 78 किलोग्राम 370. उसी तरीके से रहेगा. 2 सेपरेट कॉलम. 128 में से हमें सब्ट्रैक्ट करना है 378. सब्ट्रैक्ट कर देंगे एंड विल फाइंड द डिफरेंस. क्लियर? नेक्स्ट, मल्टीप्लिकेशन, डिविजन ऑफ मेजर. सेम प्रोसेस रहेगा, ओनली यूनिट चेंज हो रही है. मल्टीप्लाई 67 किलोग्राम 395 ग्राम बाय 7. सो हम किलोग्राम के नीचे किलोग्राम लिख देंगे, ग्राम के नीचे ग्राम. 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज इक्वल्स टू 471 किलोग्राम 765 ग्राम. नेक्स्ट इज इवोल्यूशन टाइम 11.6. मल्टीप्लाई द फॉलोइंग. 2 सेपरेट कॉलम बना लेंगे. ग्राम 1 किलोग्राम के लिए 456 ग्राम 389 को हम मल्टीप्लाई करना है 5 से. 5 टाइम्स 45, 4 कैरी ओवर, 5 8 40 and 4 44, 4 कैरी ओवर, 5 3 15 and 4 19, 1 carry over, 31, 3 carry over, 5 5 25, 8 2, 5 4 20 and 2 22. So 2281 kilogram and 945 gram. Next, divide the following. So उसी तरीके से करेंगे. 28 kg 376 ग्राम को हमें 4 से करना है, तो 28.376 को हम 4 से डिवाइड कर देंगे. क्लियर? नेक्स्ट, मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटी. द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरिंग कैपेसिटी दैट इज द लीटर. हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं. किलो लीटर KL is the bigger unit of capacity. It is used to measure the liquid of tank. Millimeter ml is the smaller unit of capacity. It is used to measure medicine of the bottle. Liquids and gases are measured in kiloliter, liter and milliliter, not in kg and gas. Liquid को हम किस में measure करेंगे? Kiloliter, liter और milliliter में. Solids are measured in kilogram and gram. All the units are interrelated, just like the unit of length and mass. So, kiloliter is the bigger unit of capacity. It's used to measure the liquid in the tanks. Milliliter is the smaller unit of capacity. It's used to measure the medicine in bottle. Here is the decreasing units. Order of unit: kiloliter, hectoliter, decaliter, liter, deciliter, centiliter and milliliter. Here are the some standard conversion.
1 kiloliter that is equals to 1000 liter. 1 liter equals to 1000 milliliter, 1 liter equals to 1 upon 1000 kiloliter, and 1 milliliter equals to 1 upon 1000 liter. Here we'll take an example, convert the following. 18 kiloliter into liter. So 1 kiloliter equals to 1000 liters, so 18 into 1000, 18,000 liter. Next is evolution time 11.7. The standard unit of capacity is liter. L से represent करते हैं. Next convert the following. 8 kiloliter 343 liter into liter. So 8000 plus 343. So 8343 42 liter. Next is convert the following. 34 liter 582 milliliter into milliliter. So 34 into 1000, 34,000 milliliter plus 582, 34,582 milliliter. Next convert the following. 48,163 liter into kiloliter liter. 1000 से डिवाइड करेंगे तो 48 हो जाएगा किलोलीटर and 163 लीटर. Next using the decimal convert the following. So 8,14,632 liter into kiloliter. So we'll divide by 1000. So ये हो जाएगा 814 that is kiloliter and 632 that is liter. Clear? So we'll divide it by 1000. So 814.632 kiloliter. Clear? Next, addition, subtraction of measure of capacity. Again, the addition and subtraction of measure of capacity is same as we have done in the length. Clear? और मास में किया था उसी तरीके से होगा. We have to add 134 kiloliter, 216 liter, 284 kiloliter and 341 liter. So two separate column kiloliter and liter के बनाएंगे. kiloliter के नीचे kiloliter, liter के नीचे liter. ऐड करेंगे हो जाएगा 418 किलोलीटर 557 लीटर. नेक्स्ट इज एवोल्यूशन टाइम 11.8. ऐड द फॉलोइंग. 458 किलोलीटर 390 लीटर, 786 किलोलीटर 415 लीटर. टू कॉलम्स बना लेंगे किलोलीटर एंड लीटर. किलोलीटर के नीचे हम किलोलीटर लिखेंगे एंड 415. 9 plus 5 14. 1 carry over 3 7 4 1 14. 1 carry over. So 1244 kiloliter and 734 liter. Next subtract the following. So उसी तरीके से हम subtraction करेंगे. 529 किलोलीटर 628 लीटर में से हमें सब्ट्रैक्ट करना है 428 किलोलीटर एंड 315. सब्ट्रैक्ट करेंगे एंड विल फाइंड द आंसर. नेक्स्ट इज मल्टीप्लिकेशन डिवीजन ऑफ द मेजर ऑफ द कैपेसिटी. मल्टीप्लाई करना है 148 किलोलीटर 396 को लीटर को 7 से. सो अगेन टू सेपरेट कॉलम बना लेंगे एंड 7 से मल्टीप्लाई करेंगे. सो दिस इज आवर आंसर. क्लियर? Next is evolution time 11.9. Multiply the following. Kiloliter and liter. 324 किलोलीटर एंड 453 लीटर को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे. 12, 1 carry over, 5 4s are 20 and 1 21. 2 carry over, 4 4s are 16, 2 18. 1 carry over, 4 4 is 16 and 1 17. 1 carry over, 4 2s are 8 and 1 9. So 1297 kiloliter, 812 liter. Clear? Next, divide the following. 471.363 को हम 3 से डिवाइड कर लेंगे and we'll find the answer. Next is story problems. Sheena bought 15 meter 65 centimeter cloth for the curtain, 8 meter 18 centimeter cloth for the sofa cover. How much total cloth did she buy? तो दोनों को हम ऐड कर देंगे, जितना उसने कर्टेंस के लिए और जितना सोफा कवर के लिए, दोनों को ऐड कर देंगे. मीन्स वी हैव टू ऐड 15 मीटर 65 सेंटीमीटर, 8 मीटर 18 सेंटीमीटर. सो ये आ जाएगा टोटल, दैट इज 23 मीटर 83 सेंटीमीटर टोटल को.
Next is evolution time 11.10. 3 bags contain 98 kg, 384 gram wheat, 54 kg, 694 gram rice, 38 kg, 186 gram sugar. Find the total quantity in 3 bags. तो total हम तीनों को add कर देंगे. Again 2 separate column kilogram and gram का. 98 and 384. 54 kg, 694 and 38 kg, 186 gram. Add them together. 6 plus 4, 10 and 4, 14. 4, 1 carry over. 8, 8, 16. 24, 25, 26. 2 carry over. 9 and 1, 10 and 2, 12. 1 carry over. 21, 2 carry over. 8, 8, 16, 1, 17, 18, 19. This is the total weight. Clear? So you have to practice all the questions given in the exercise. Next is look back. The standard unit for the length of this meter, kilometer, is the bigger unit of the length. It is used to measure the distance between two places. Conversion of some standard unit, 1 kilometer equals to 1000 meter. 1 meter equals to 100 centimeter. 1 meter equals to 1000 millimeter. 1 centimeter equals to 10 millimeter. Mass is the quantity of the matter present in the body. The standard unit of mass is gram. Some important conversion, 1 kilogram equals to 1000 gram. 1 gram equals to 1000 milligram. 1 gram equals to 1 upon 1000 kilogram. 1 milligram equals to 1 upon 1000 gram. The standard unit for measuring capacity is liter. Kiloliter is the biggest unit for capacity. Milliliter is the smallest unit for capacity. Some standard conversion, 1 kiloliter, that is equals to 1000 liter. 1 liter equals to 1000 milliliter. 1 liter equals to 1 upon 1000 kiloliter, and 1 milliliter equals to 1 upon 1000 liter. Next is let's recall. So you have to practice all the question given here. Next is mental zone. 6754 centimeter, that is equals to 67 meter and 54 centimeter. Will divide by 100. Next is multiple choice questions. So weight of your geometry box, including all the things kept on it, it's about 150 grams. Depend. Clear? So here we end the chapter. I hope chapter आपको समझ में आ गया and I will do practice it.